Let's see what we have today. Let's see. So, hi everyone, welcome to my live stream. So, hi everyone, welcome to live stream. How are you all? So, let me just give some questions what we have for today, that is related to the Python questions. Let's do it. Okay. So, okay. I hope we are done with this. So, chalo, let's start with the assignment today, that is related to the SQL assignment that we have started yesterday. Continuation, and we will also solve the doubts. So, doubts clearing will also be there in the live stream. Okay. So let's start with this, and if you have any doubts, please ask your doubts in the live stream. Okay. Let's see, do we have any doubts here? Not yet. Okay. Let's do it. So we have done till, I think, question number 1, right? We have done till question number 1. Right now, let's move to question number 2. In question number 2, what they have told, like, give the order details where order date is after 2023. So if we check out the data, so there are orders related to 2023, 2024, 2022, like this. Okay. So what we will do is, like, we will go to the
order date column, right? First, what we will do, we will go to the order date column, and from there we will do the extraction. What we will extract? We will extract year, and we will do like this. So in this, what will happen? Whatever orders we have after 2023, we will get in the output. Okay, whatever orders we have after 2023, we will get that in the output. Take, or we can do one thing very simple. second way second way is like, we can write order date should be after this, that is last day of 2023, I mean December. Okay, so till here we will have, I mean, like this way, any of the process we can use to get the orders after 2023. Okay, let's do it. Let's go to our SQL workbench and let's take on the table first. We will do select everything from 7-Eleven store, right? Execute it. After this, what we will get like this. So we only need the order date. That's it. Let's see what we get in the output. This is the output that we have got. Let's just do the extract year from order date. Then we will write group by this. Let's see how many order dates are there. So total there are 4 order dates. So 22, 23, 24 and 25. Okay. So we can do like this. We can say where this greater than 2023. We'll write select everything. Okay, this is what we have received. Whatever order you will see, let me do an order by here. If you see, the starting date is 2024 January 2nd January 2024. So here we can say that all the orders that we are seeing here is after year 2023. Okay, so till here we have done our work related to the question number 2. And if you have any doubts, you can ask your doubts in the live stream related to either this question or any question you want to ask. Okay, you can ask your doubts related to this. So anybody have any doubts, please ask your doubts in the live stream. Anybody have any doubts in the live stream, please ask your doubts. So any doubts anybody have related to this query?
please ask your doubts. Okay, now let's do one thing. Let's move to the next part of this assignment, that is question number 3. So we have find out the customer whose name is having third letter as A and fourth letter as D. Let's write it here. So we want a name. Okay, we want what? A name where third letter is A and fourth letter is D. ठीक है, let's do it. Third letter is A and fourth letter is D. I mean to say, if we write a name like this, so this will qualify. Why? Because the third letter here is A and the fourth letter here is D. And to find out the data inside a text, what we need to do, we can simply use this like function. How to do it? Take like this. So first two letter can be anything, but third and fourth letter should be D, and after D anything would be there. Okay, after D anything can be there. Okay, so this is how we find the output inside the data. Okay, inside the data, right? So till here, anybody have any doubts? So anybody have any doubts till here? Please ask your doubts in the live stream. Any doubts anybody have related to this query? You can ask your doubts. Okay, so let's move to the SQL workbench and do the work. So select everything from seven 11 store and execute it. Okay, here done. Right now what we need to take care of, we need to take care of customer name. Okay, that's it. Execute. We got the output. Then we will write where customer name, like first two letters can be anything, but third and fourth letter should be A and D. After that anything can be there, no worries. Execute this and we can write distinct and execute. This is what we get in the output. So till here, anybody have any doubts? Please ask your doubts in the live stream. And here if you see, there are total 9 rows
which are having customer name. So anybody have any doubts still here? Please ask your doubts in the live stream. Anybody have any doubts related to this? Please ask your doubts in this. Anybody have any doubts? Please ask your doubts in this. Hey, hi, welcome to live stream. Welcome to live stream. So okay, let's move to the fourth question here. Okay, so what's the fourth question? Fourth question is about, like, give the order ID, product name, order date, and discount where order date is between June 22 till November 22. Okay, let's do it. Okay, we have a query. Is there any opening for freshers related to, like, data analytics domain, or what domain? Like, we are here for data domain. So if you are asking for data analytics, we have openings, and I post all those fresher related openings in my YouTube post, and also in my Telegram channel, right? Right now Telegram channel is blocked, as you know, till I think June 22, but in my YouTube post you can check it out. Okay, whatever vacancy I get from my friends, like via LinkedIn through messages, I just post it related to the vacancy. Sometimes I post related to non-technical domain as well for freshers, and that is for freshers, so please do check that out. So let's see what we have in this. What was the question? Give the order ID, product ID, name, and date. Okay, so give us the column, right? Whatever columns it has given. Okay, first thing. Second thing is what they have told, order date is between June 22. So here order date have a, this have what, order date have a filtration, right? Okay sir, चलो ठीक है, no worries, no worries, and thank you for joining the live stream. So order date have a filtration. What is the filtration? The order date should be from June 22 till November 22. ठीक है, this is the filtration. How we will do it? We can simply write 2022 0601, that is 1st June, till 2022 11 last of November. ठीक है, this is how we can do it. So what is the process of it? Let's check this out in the SQL workbench.
execute it. So we have order date, and we will write where order date between. ठीक है, we have to use between function. Then we have to write 0601 between this and no, between this and 11:30. ठीक है, execute it. Order date ही आ गया. We need everything. Sorry, we need some columns. I'm really sorry. What are the columns here? Order ID, product ID, product name, and order date. ठीक है, these are the things. Execute it, and this is what we get in the output. ठीक है, if you check it out here, we have order ID, product ID, and the order date. And if you see each and everything, let me do the order by. This, execute it. It is from 1/6/2022 till 30/11/2022, and it is from June till November. ठीक है, so till here anybody have any doubts? They can ask your doubts in the live stream. Anybody have any doubts till here? Please ask your doubts in the live stream. Okay sir, चलो ठीक है. Okay. So if you have any doubts in this, now we have a query. Now I checked your post. Thank you sir. Yeah, welcome brother, welcome. And whatever job vacancy related to freshers I get, I just post it, so you can directly go and apply there. And mostly मतलब each and every post is related to the fresher point of view. I mean related to fresher point of view, so you can just apply, no worries about it. So anybody have any doubts for this question?
please ask your doubts in this. Anybody have any doubts? Okay, we have a query. I want data analyst job. I will check daily today onwards. Yeah, you can or you can just click on the notification. You can directly get the notification whenever I get message for the job vacancy. I also post for non-technical as well. So if you want, you can apply in that too. So let's see what we have next. That is question number 5. Let's go for the question number 5. Okay. So okay, we have a query. Now I am taking coaching for DSR. Okay, nice, yeah, nice. That's good. And any doubts you will be having, you can just join my live stream and ask me doubts. If you miss the live stream for some reason, this is my mail ID. You can directly mail your doubts to my mail ID. I can also help you out in this. And I mean to say, why I kept mail ID is like, sometimes you might be having an error in your SQL or Python workbench, so you can just take a screenshot and ask your doubts in the mail, like, this is the scenario, this is the challenges you are facing and you need help, I will help you out. Yeah, but please take, like, I mean to say, due to my freelance work and all, I just revert all the mails max to max by Saturday and Sunday of a particular week. Okay, I mean Monday to Friday, whatever mail I get, I just reply to it if it comes in the thread. If not, Saturday and Sunday is the final day where I reply each and every mail for the week. Okay, so please expect a delay and sorry for that in advance. So anybody have any doubts till here? You can ask your doubts in the live stream. Okay, let's move to the next question. Where's the question? Yeah. Question number 5. Find out customer whose name contains the word apple. Okay. Let's see what kind of scenario we can face. Suppose here is a scenario. Name. ठीक है, middle name can be apple, starting name can be apple, second name can be apple, anything. Apple can be anywhere. Why? Sorry, because they have asked in the question ki whose name contain the word apple. They haven't told like the starting name should be apple or the ending name should be apple or the middle name should be apple. They haven't told about it. Okay, they have told कि wherever the word apple is there, just give us those customer name. How will you find out? Very simple. You can just go like this, like, anything can be there in the starting. In apple should, I mean, anything can be there before apple, anything can be there after apple. Okay, this is what they have asked in the question. Simple, right? So let's do the same work in our SQL workbench. It is like select everything from acha. Okay, yeah, one more thing, Balaji, I would, if you want any project, you can take this project from here, right? I have some, I mean, free projects in my live stream, and from July onwards we will be working on some case study related to SQL and Python, so you can check out those as well, right?
So these are some project related to data domain, and this is a data science project. You can go and check this out, and also you can use those project in your CV, resume, LinkedIn, GitHub, wherever you want to. So if you have any doubts, please ask your doubts in the live stream. Okay, let's start with the question that we have done the dry run for. That is question number 5, I think. It is question number 5. We need what? Customer name from 7-Eleven store, where customer name like this. ठीक, let's execute and see what output do we get. Let me do distinct here and execute it. So this is the name of an customer who is having Apple in their name. Okay, that's it. And we have to use capital A, and then PPLE. It is should be in lowercase format. Okay, as it is given, and this is what we get in the output. So if you have any doubts in this, please ask your doubts in the live stream. If you have any doubts, please ask your doubts in the live stream. So any doubts anybody have, please ask your doubts in this. Anybody have any doubts? Please ask your doubts in the live stream. Any doubts anybody have? Hey, hi Karthik, welcome to live stream. So let's see what we have next. Anybody have any doubts till here? You can ask your doubts, or any doubts from SQL, Python, Power BI. You can ask your doubts. Okay. Anybody have any doubts? Any doubts anybody have? Hey, hi Sanskar, welcome to live stream.
Any doubts anybody have? Please ask your doubts in this. Okay, let's see what we have next. So let's start with the next question, that is related to question number 6. Okay, so what we have in question number 6, let's see. Question number 6, we have details of order ID after June 2024 where ship mode is either cash or pay later. Let's write it, let's do a dry run for it. Okay, so the question is order ID after June. Okay, order ID is what we need to find out, but the main question is order date should be after June 2024. ठीक है, 30. ठीक है, I mean to say after June 2024 the order IDs should be there in the output. ठीक है, simple. Also the ship mode should be either in cash or pay later. ठीक है, the ship mode should be either in cash or pay later. So there are three condition that we need to take care of. ठीक है, first is ship mode, then we have order date. ठीक, ship mode 2 condition, order date 1 condition. Okay, we have a query from Karthik. Okay, nice. Chalo, let's write it here. Select ship mode, order date from 7-11 store. I will write where ship mode greater than, either you can write the date, that is 2024-30. This is the scenario, and wait, and what is the thing, ship mode. ठीक है, ship mode should be in either cash or pay later. Wait, let's do it. Wait, no,
detail of order ID. So I would like select everything. Let's see, still no answer. So what's the issue here? After June 2024, okay, so there is no data here for this. Okay. Oh, ship mode we have done. The issue is we need to take care of the order date. Okay. Order date is greater than this or this. No, here it was correct. It will be end. Order date should be greater than this, and ship mode in cash or pay later. Wait, let me see. Pay late. Okay, so we have done incorrect writing here. We have to write cash, and pay later is not like this. It should be like this. Okay, that's the reason we are not getting the output. Right now we got the output because of the two issues. Here we have written ship mode greater than this, so that is the first issue. Second issue is we have written small c, matlab lowercase c, and p and l was also in lowercase, but in actual scenario p and l are in uppercase, and there is a space between that, plus the cache, the c in the cache is in uppercase format. So till here we have found the output, and if you have any doubts related to this thing, please ask your doubts in the live stream. If you have any doubts related to this, please ask your doubts in the live stream. Anybody have any doubts? Please ask your doubts in this. So anybody have any doubts in this? Any doubts related to these questions, or any doubt related to SQL, related to Python? Any doubts anybody have in the live stream?
So any doubts anybody have? Any doubts anybody have in the live stream? Let's see. Any messages? Any messages right now? We have message from Karthik. Only. Okay. Okay. Hi Siddharth. Welcome to live stream. Uh, decorator. Decorator. mm, Is there anything for this? मतलब related to what topic? To be honest, first time I'm hearing this decorator something. Mm, okay. Okay, we have two queries from Karthik, A, B, and C. No, any one answer. We have to just give, I mean, the poll question, there is only one answer in this. So you have to give only one answer. Okay, we have a query from Siddharth Python. Okay, okay. That what I thought in SQL we don't have. This, yeah, there's a function, means it is what you know. It adds up a layer of function. Okay. I mean to say when you create a function like this, like you write def, then a function named like this. So before a function, a layer of another function is added. That's it. Okay. A layer of another function is added. So the main thing is like without doing any manipulation or any changes in the base function, you can add one more function, and that is called decorator, right? That is the thing. That's what I thought. In SQL we don't have any.
So any doubts you have, anything you need to take care of, any example you want to see? So any doubts anybody have? Any function, any doubts you have to be taken care of? Any doubts? Okay. Let's move to the next question of this, that is related to question number 7. Okay. Yes, 7. So find out the customer name whose name does not start with B and end with EY. Okay. Nice thing. So suppose there are 2 3 names in the column, right? Question क्या था? And end with EY. Okay. So they have asked find out customer name whose name does not start with B and end with EY. When we write the query, we will get this 3 output, right? Name does not start with B. Huh. So this 3 output we will get, and how to do it? We have to use like operator. I mean like function, and in this we have to write not like. ठीक है, earlier we used to tell the data inside the name should be this. For that we used to use like. ठीक है, right now we have to tell Python कि this thing should not be there. So not like will be used, and how to use it, let us see in this. Where customer name not like should not start with B, in between it can be anything, and end with EY. And let me just take the customer name. ठीक है, execute it.
Right now you see, if I do order by as well, right now you see all the data. Okay, let me do distinct 2 and execute it. Right now see all the data here related to B. I mean starting with B, but it's not ending with EY. Okay. So this is how we use not like with the customer name to find the output. So till here, any doubts anybody have? You can ask your doubts in the live stream. Anybody have any doubts? Okay. Let's start with the next question, that is related to question number 8. Okay. What we have in question number 8, we need to retrieve the details of order ID, date and ship date. These are the columns for order placed on 20th June 2023 and return the top two records sorted by highest profit. Okay. Okay. Let us see. Order placed on 20th June 2023. So we have to say order date equal to 20th June 2023. ठीक है, and return the top two records by highest profit. So if we do order by profit descending with limit of 2, we will get the output. ठीक है, simple, right? And how to do it in practical manner? We can write everything from 7-Eleven store, and whatever column name is required we will be writing it afterwards. ठीक है, once we write the logic here where order date equal to 2023 06 20, ठीक है, order date equal to this, execute it. So these are the output. ठीक है, so right now we will be taking care of the column names. We need order ID, order date, ship date, and also let's take अच्छा order date है, चलो ठीक है, from this where this we will be doing. Okay, let's take the profit also. So we will be writing what happened, order by profit descending limit 2. This is what we get in the output. ठीक है, limit 2 what it does, it shows the first two data in the output, and order by profit descending what it does is like it keeps the column that is related to the profit in descending order. Descending order means what, highest to lowest. ठीक है, like this. So till here we have find the output, and we have used logic related to equal to operator, related to order by function, and related to limit.
ठीक है, 3 things we have used. Hey, hi Anil, welcome to live stream. भाई एक्सेल प्रोजेक्ट, ओके, ये ले लो एक्सेल का प्रोजेक्ट. So okay, anybody have any doubts till here? You can ask your doubts in the live stream. Anybody have any doubts? Any doubts anybody have? Let's see what we have in this. Do we have any doubts related to this? Anybody have any doubts related to this thing? Okay, we have a query excel column adjust, excel column adjust थोड़ा बढ़ता दो. Okay, let's do it. एक मिनट. अब देखो, सपोज अपने पास इस तरीके से कुछ कॉलम है, राइट? एग्जाम्पल, ठीक है. अगर इस तरीके से कुछ कॉलम है और आपको सपोज इस टाइप से बहुत सारे कॉलम्स है अपने पास, ठीक है, ठीक है. हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करोगे, राइट, एक साथ यहाँ सिलेक्ट करना, इसमें क्या होता है, पूरे शीट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, राइट. उसके बाद कोई भी कॉलम का यहाँ देख रहे हो, कोई भी कॉलम का बॉर्डर पकड़ो और डबल क्लिक करो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हर एक कॉलम के अंदर जो भी डेटा रहेगा उसी हिसाब से वो कॉलम को एडजस्ट कर देता है, ठीक है. दैट्स इट, राइट. ये तरीका है कॉलम एडजस्ट करने का. सपोज आपको ओनली 2 कॉलम एडजस्ट करना है, फॉर सम रीज़न आपको
ये सब नहीं चाहिए फॉर द सिनेरियो। सपोज मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। सपोज आपको सिर्फ 2 कॉलम ही ठीक करना है फॉर सम रीज़न, इस टाइप से, तो आप 2 कॉलम ऐसे सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, यू गेट द आउटपुट, राइट, सिंपल। ठीक है, लाइक दिस। और किसी को कुछ डाउट? ओके, वी शॉर्टकट है जब बहुत सारा डेटा हो, तो जब बहुत सारा डेटा हो, मैंने बताया ना अभी, जैसे मैं और एक बार बोल देता हूँ आपको। सपोज इस टाइप से बहुत सारा डेटा है, ठीक है, और इस तरीके से अपना कॉलम सेट है, तो इस पे आपको क्या करना है, ठीक, आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है। या तो आप कंट्रोल ए कर सकते हो, कंट्रोल ए में क्या होगा, जितने भी डेटाज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैकबुक में अलग है, मैकबुक में आपको यूज़ करना पड़ेगा कमांड ए, बट इट इज़ लाइक कंट्रोल ए इन विंडोज़, ठीक है। एक बार ऐसा करने के बाद आपको कोई भी एक बाउंड्री में जाना है, ठीक है, बाउंड्री ऑफ द कॉलम। जब आप कॉलम के बाउंड्री में जाओगे, इस तरीके से एक प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से एक प्लस साइन आ जाएगा, उसको आपको डबल क्लिक करना है, तो सारे कॉलम प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। या तो और एक तरीका है, इसका है ऑप्शन प्लस कमांड प्लस ज़ीरो, ठीक है, होगा क्या देखते हैं। नहीं, इस पर नहीं हो रहा है। नहीं, मैकबुक में तो हो नहीं रहा है, दिक्कत वही है। सबसे बेस्ट है कंट्रोल ए, पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, ऑल्ट एच ओ आई शॉर्टकट, हाँ वो शायद विंडोज़ में होता होगा, विंडोज़ में होता होगा, इसमें अपने इसमें तो नहीं है, मैक वाले में। फिर भी देखता हूँ, ऑल्ट एच ओ आई, नहीं ये तो नहीं हो रहा है भाई। विंडोज़ में होता होगा, फिर ऑल्ट एच ओ आई शॉर्टकट रिलेटेड हो जाता होगा विंडोज़ में, एच प्लस ओ प्लस आई। बट उसके पहले आपको पहले शीट सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा इसका, ठीक। नहीं तो सबसे बेस्ट कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करो, जस्ट गो विद द कॉलम, डबल क्लिक एंड यू गेट द आउटपुट। इस तरीके से भी कर सकते हो। और रिलेटेड टू दिस, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, वो प्लस रहेगा, स्लैश नहीं, प्लस रहेगा वो, ठीक है। वो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यस इट विल वर्क, ठीक है। और कुछ डाउट्स किसी को? और एक ऑप्शन देखता हूँ, होम, ओके वी हैव, आपका डब्ल्यू पी एस है, हाँ मैं डब्ल्यू पी एस यूज़ कर रहा हूँ, डब्ल्यू पी एस ऑफिस, राइट। राइट, any doubts anybody have?
ओके, वी हैव अ क्वेरी, वन मोर क्वेरी कि कैसे डाउनलोड करें। यू डायरेक्टली गूगल में जाके यू कैन डू इट। गूगल में जाओ, यू विल गेट द WPS ऑफिस। गूगल में जाके सर्च करो, नहीं तो वेट, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे लिंक, अगर मिलता है तो। ये WPS का लिंक है, आप ले लो, यहाँ मैं सेंड कर दे रहा हूँ। इस पे जाने से आपको शोकेस करेगा लाइक विंडोज़, मैक, लिनक्स, आईफोन, एंड्रॉयड, जिसमें भी चाहिए आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इजी है, गुड टू यूज़। तो ओके देन, लेट्स सी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। किसी को और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो लाइव स्ट्रीम पे। तो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हो गया अपना हाईएस्ट प्रॉफिट रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर इन क्वेश्चन नंबर 9। We have retrieved the details where ship mode is cash and no discount is given. Also quantities either 3 or 7. Let's see. इसमें बहुत सारे requirements है, right? There are lots of requirements जो कि हमें टेक केयर करना है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हाँ, रिक्वायरमेंट क्या क्या है यहाँ पे? ऑर्डर प्लेस्ड, सॉरी, शिप मोड इज़ कैश। ठीक, जो शिप मोड है वो क्या रहेगा? कैश फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है नो डिस्काउंट इज गिवन। सो डिस्काउंट नो। ओके, वी हैव अ क्वेरी, मंथली फ्रीलांसिंग में कितना होता है? देखो, अपना एवरेज रहता है पर आवर के हिसाब से, मतलब मेरा पर आवर के हिसाब से रहता है $7 टू $14 पर आवर बेसिस रहता है। ठीक है। अब एक दिन पे डिपेंड करता है कि मैं कितना घंटा काम करता हूँ। ऑन एन एवरेज मेरा 10 आवर्स जाता है पर डे, 10 आवर्स जाता है पर डे। और सैटरडे संडे में ऐसा कुछ छुट्टी नहीं रहता है, तो आ जाता है मंथली ठीक ठाक। और ऑन एवरेज अगर मैं मंथली एवरेज बोलूँ पर डे मंथली एवरेज अगर मैं बोलूँ तो $10 जाता है। कभी कभार हो सके तो $11 चले जाता है पर आवर। तो डिपेंड होता है किस तरीके से क्या काम दे रहे हैं क्या नहीं, उतना अब ठीक ठाक आ जाता है। नॉट दैट मच यूज, बट ठीक है। मतलब जितना मैं अमेजन में करके कमा रहा था काइंड ऑफ, उससे थोड़ा ज़्यादा, राइट। ओके, वी हैव अ क्वेरी, क्या मैं 20,000, भाई 20,000 से ज़्यादा कमा सकते हो? इट इज़ नॉट लाइक कि आप 20,000 कमाओ, उससे ज़्यादा कमा सकते हो फ्रीलैंसिंग में अगर आपका क्लाइंट का बजट स्ट्रॉन्ग है प्लस रिक्वायरमेंट बढ़िया है, सो यू कैन गेट प्रॉपर आउटपुट। ठीक है। बजट और रिक्वायरमेंट अगर क्लाइंट का सही है तो यू विल गेट, राइट, मोर देन 20,000, नॉट ओनली 20,000। इतना आपका दिन में आप कमा सकते हो, राइट। पर डे भी कमा सकते हो अगर रिक्वायरमेंट अच्छा मिला तो फ्रॉम द क्लाइंट, राइट।
तो एनीबडी हैव एनी डाउट्स इन दिस? किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द लाइव स्ट्रीम. तो चलो यहाँ पे लेट्स सी व्हाट वी है. ओके, विंडोज़ 10 में चलेगा 8 GB. हाँ हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं. विंडोज़ 10 11, अभी तो 11 चल रहा है. विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. आराम से चलेगा. 8 GB रैम बेसिक है. 8 GB रैम उससे अच्छा आज के डेट में अगर, हाँ 16 GB भी मिल रहा है. 8 GB रैम इज़ वेरी बेसिक. आराम से चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. ठीक है, मतलब इवन दो विंडोज़ 11 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 8 GB में. 8 GB रैम आई मीन टू से. और विंडोज़ अच्छा भी है, सारे सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए. कोई दिक्कत भी नहीं होगा, फ्री सॉफ्टवेयर्स रहेगा और प्रॉपर रहेगा. राइट, ओके. थोड़ा जो कोड लिखने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं. कोड लिखने में जो दिक्कत हो रहा है वो आपका, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा. राइट, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मतलब डेली प्रैक्टिस इन द सेंस, अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हो, 1 आवर भी दे रहे हो जाएगा. ओके, क्या रैम बढ़ा सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं. एक्सपेंडेबल रहता है हर लैपटॉप में आज के डेट में. एक्सपेंडेबल रहता है, मतलब 8 GB रहता है. एक्सपेंडेबल शायद 32 GB तक कर सकते हो. राइट, रहता है. रैम बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. विंडोज़ में रहता है एक्सपेंडेबल. मेमोरी भी रहता है, मतलब जैसे रहता है ना, जैसे 500 GB स्पेस को आप 1 TB तक भी कर सकते हो. प्लस रैम भी एक्सपेंडेबल रहता है. मतलब अगर 8 GB है तो शायद 32 तक जा सकता है, ऐसा कुछ रहता है. तो इट इज़ प्रॉपरली, वी कैन डू इट. जब इनकम आएगा तब लैपटॉप लेंगे. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम लेना. सबसे बेस्ट टाइम रहेगा लैपटॉप लेने का, बता रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर में, जब बिग बिलियन डे सेल्स आता है. राइट, फ्लिपकार्ट अमेज़न में आता है बिग बिलियन डे सेल्स. उस टाइम लोगे तो और भी कम रेट में पड़ेगा. मतलब फ्लिपकार्ट अमेज़न में आता है सेल, एक बड़ा सेल आता है अक्टूबर नवंबर टाइम में आता है, ऐसे कुछ आई डोंट रिमेम्बर, बट अच्छा रहता है. बहुत कम रेट में मिलता है, बहुत ही कम रेट में. फ्लिपकार्ट अमेज़न कहीं से भी. राइट, बट अभी अगर लेना है ले सकते हो, ऐसा नहीं कि उतने टाइम तक वेट करना है. ठीक है, अभी चाहो तो ले सकते हो. ठीक है, उतना क्यों वेट करें. जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना से आप 3 महीना पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा. अभी बढ़ा सकते हैं कि लर्न पे, अभी बढ़ा सकते हैं कि लर्निंग पे ध्यान दूँ. भाई हो जा, देखो अगर आपका काम हो जा रहा है 8 GB में, तो काम अगर हो रहा है चलेगा. मतलब मैं तो अगर बोलूँ बेसिक्स में, अगर आप VS कोड या तो जुपिटर नोटबुक चला रहे हो ना पाइथन के लिए, और सीक्वल के लिए कुछ भी जैसे पोस्ट GRE सीक्वल SSMS कुछ भी चला रहे हो जाएगा, आराम से चल जाएगा. 8 GB बेसिक काम के लिए, सब बेसिक काम के लिए आराम से चल जाएगा. गेम वगैरह के लिए नहीं चलता है 8 GB आज के डेट में, बट बेसिक्स रिक्वायरमेंट चाहिए तो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है.
ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यही क्वेश्चन है। शिप मोड इज कैश, नो डिस्काउंट इज गिवन। तो एक बार वापस से लिखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया अपने को? शिप मोड। शिप मोड जो रहेगा वो क्या रहेगा? कैश में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या रहेगा? ज़ीरो डिस्काउंट, और नो डिस्काउंट इज गिवन। तीसरा कुछ पूछा है क्या इसमें? हाँ, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या रहेगा? इधर 3 या तो 7। तो अपने को अभी क्या है? 3 रिक्वायरमेंट्स कवर अप करना है। थ्री रिक्वायरमेंट्स अभी अपने को कवर करना है, ठीक है। तो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। अभी बिगिनर हूँ, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, बिगिनर एक्सपीरियंस का कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल एक्सेल चलाना है, हो जाएगा। सीक्वल पाइथन चलाना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली चल जाएगा। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम 7-Eleven स्टोर। ठीक है। अब इस पे अपने को क्या करना है? एक मिनट। अपने को क्या करना है? शिप मोड। पहले अपने को देखना है शिप मोड में कुछ है क्या, और क्या क्या चाहिए? डिस्काउंट, और क्या चाहिए? क्वांटिटी। एग्जीक्यूट। ठीक है, चलो अब हम लोग लिखेंगे फिल्ट्रेशन। वेयर शिप मोड इन कैश। ठीक है। एंड नो डिस्काउंट इज गिवन, एंड डिस्काउंट इक्वल टू 0। ठीक है। एंड और एक रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी इन 3,7, एंड कर देंगे इसको एग्जीक्यूट। अब देखो अपने पास आउटपुट भी आ गया, कैश भी आ गया, डिस्काउंट एंड क्वांटिटी। ठीक है। तो सारे चीज़ अपने पास प्रॉपरली आ गए। शिप मोड अपने क्या क्या रिक्वायरमेंट कवर अप किया? शिप मोड इन कैश यहाँ पर, देन डिस्काउंट 0। ठीक है, डन। उसके बाद क्वांटिटी भी हमने दिया इन 3 और 7, राइट। सो टिल हियर किसी को कुछ भी डाउट्स हो लाइव स्ट्रीम पे, आप प्लीज़ डाउट्स पूछ सकते हो, राइट। तो आपको कुछ भी डाउट हो, ओके वी हैव अ क्वेरी। आप बहुत अच्छे से बता रहे हो भाई, थैंक यू यार, वेलकम यार, वेलकम, थैंक यू भाई, थैंक्स टू यू कि आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे आए, थैंक यू फॉर दैट। तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन है वो कवर अप किया है, जितने रिक्वायरमेंट्स हैं हमने इसको कवर अप किए हैं। और अगर आप एक बार चेक कर सकते हो रिलेटेड टू ऑर्डर बाय करके, क्वांटिटी अगर मैं असेंडिंग देता हूँ तो हमारे पास 3 आएगा डेटा, क्योंकि हमने क्वांटिटी 3 या 7 आउटपुट में निकाला है, राइट। या तो 3 या तो 7 रहेगा। और एक मिनट, 3 और 7 में स्मॉल नंबर क्या है? 3 है, राइट। तो अपने पास जब हम ऑर्डर बाय क्वांटिटी करेंगे हम लोग को 3 आउटपुट में मिलेगा। अब सेम चीज़ अगर मैं डिसेंडिंग कर दूं तो अपने को 7 मिलेगा। ये चेक करने का तरीका है। तो फ़िलहाल के लिए उन्होंने कुछ पूछा नहीं है कि आप ऑर्डर बाय करो या नहीं, लेकिन चेक करने के लिए मैंने जस्ट आपको शोकेस किया है, राइट। अब यहाँ पर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो अपने लाइव स्ट्रीम पे। किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम पे आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो।
किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो लाइव स्ट्रीम पे। एनी डाउट्स भाई, किसी को कुछ भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ पूछिए लाइव स्ट्रीम पे। एनी डाउट्स एनीबडी हैव? किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए आप लोग लाइव स्ट्रीम पे। एनी डाउट्स एनीबडी? ओके, आप शायद कोर्सेज का पूछ रहे हो। कोई कोर्सेज है आपका जो बिगिनर से लर्न कर सकते हैं? हाँ, आप चाहो तो पाइथन का कोर्स, सॉरी सीक्वल का कोर्स है, वो बिगिनर से लर्न कर सकते हो। बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, वो प्रॉपर लेवल में है, ठीक है। ये मेरे कोर्सेज हैं और इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। सेम टॉपिक को हमने हिंदी में भी पढ़ा है, सेम टॉपिक को इंग्लिश में, और नेक्स्ट डे के हिसाब से। मतलब आज अगर सपोज आज कितना 18 है, 18 जून को सपोज हमने इंग्लिश में पढ़ा है, 19 जून को सेम चीज़ हम लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सीक्वल कोर्स है, आप जाके चेक कर सकते हो। और बाकी अगर आपको कुछ कोर्सेस रिलेटेड चाहिए तो अपने पास और भी है वेब, मतलब यूट्यूब के, वहाँ से भी आप कर सकते हो, बिगिनर के लिए ही है। बट मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसीलिए वो क्या है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, राइट। ओके, वी हैव अ क्वेरी मेंबरशिप। मेंबरशिप में देखो एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, वो सारे का जो एडवांस और मतलब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल है, ठीक है, वो सब है मेंबरशिप में, मेंबरशिप वीडियो में। तो अगर आपको ये जो फ्री प्रोजेक्ट है, पहले आप फ्री प्रोजेक्ट देख लो अनिल। अगर आपको फ्री प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और आप समझ पा रहे हो फ्री प्रोजेक्ट, क्योंकि फ्री प्रोजेक्ट में क्या है, मैंने बहुत फ्रेशर लेवल पे पढ़ा है, बिगिनर और फ्रेशर लेवल पे पढ़ा है, ठीक है। बिगिनर लेवल पे बेटर रहेगा अगर वो आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। हाँ, एक्सेल वाला फ्री है, एक्सेल के लिए कोई मेंबरशिप नहीं है, इतना बता दे रहा हूँ। तो अगर आप मेंबरशिप लोगे और सोचोगे एक्सेल का रहेगा, नहीं, एक्सेल फ्री है, सबके लिए फ्री है एक्सेल वाला। और जितना प्रोजेक्ट यहाँ है उसी का ही एडवांस वाला पार्ट है बस, और कुछ नहीं, उसी का एडवांस पार्ट है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये फ्री वाले कोर्सेस तो ही आप मेंबरशिप लेना, नहीं तो नहीं, राइट। अच्छा, मंथली कितना देना पड़ेगा? 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है। और 60 रुपीज़ में सारे चीज़ मिल जाएंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 60 देना पड़ेगा, 60 में सारे प्रोजेक्ट आपको शोकेस होंगे, दैट्स इट। बट मेंबरशिप लेने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप ये एक बार चेक कर लो सारे प्रोजेक्ट जो मैं लिंक दी हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही लेना, नहीं तो पैसा खर्चा नहीं करना है, राइट। क्योंकि वो बिगिनर लेवल प्लस इंटरमीडिएट प्लस एडवांस तीनों है उसमें, इसलिए बोल रहा हूँ। तो पहले ये सब आप एक बार चेक कर लो, अगर अच्छा लगेगा, समझ में आ रहा है, देन आप चाहो ले सकते हो। 60 रुपीज़ वाला लेना, 120 वाला मत लेना, सेम चीज़ है, राइट, इसलिए बोलो। बट खर्चा करने से पहले, मेंबरशिप लेने से पहले, सिंपल वर्ड्स में ये सारे एक बार चेक कर लो, ठीक है। अच्छा लगेगा तो लेना, नहीं तो पैसा वेस्ट नहीं करना है, राइट। इसलिए मैं ऐसा फ्री प्रोजेक्ट भी रखा हुआ हूँ ताकि एटलीस्ट सबको डेमो मिले कि मेंबरशिप में क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं रखा हूँ, ताकि मैं चाहता नहीं कि आप लोग पैसा दो, मेंबरशिप ले लो, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मनी वेस्ट है कि नहीं। इसलिए मैं फ्री वाला भी रखा हूँ। फ्री वाला एक बार देखो, अच्छा लगेगा, गो फॉर मेंबरशिप,
दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि जस्ट, मतलब 60 रुपीज़ का भी वैल्यू है टू बी ऑनेस्ट, कम है बट स्टिल चेक द फ्री वन। फ्री वाला एक बार आप चेक कर लो, जितना लिंक दिया हूँ उतना ही। और सारे लिंक बिगिनर के लिए बेस्ट है। ये बिगिनर के लिए ये सारे प्रोजेक्ट बेस्ट है जो मैं आपको लिंक दिया हूँ, ठीक है। या तो जो मेरे इस लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे लाइव स्ट्रीम, ये जो लाइव स्ट्रीम आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसमें प्रोजेक्ट लिंक्स करके होगा, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट लिंक्स में जो है ना, उसमें जितने वीडियोस है वो सब बिगिनर के लिए है, राइट। वो बिगिनर के लिए, ठीक है, वो फ्री वाला बिगिनर के लिए। मेंबरशिप वाला थोड़ा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का है, दैट्स इट। बिगिनर के लिए बेस्ट है ये, हाँ है बेस्ट है फ्री वाला, दिस वन। मेंबरशिप वाला इट्स फॉर थोड़ा हाई लेवल। कोई बात नहीं भाई, मुझे आपका समझ में आता है, सही है यार, चलो दैट्स अ गुड थिंग यार, दैट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल पे करने से पहले एक बार आप देख लो। रिकमेंड कर रहा हूँ एवरीवन, क्योंकि मैंने फ्री वाला इसीलिए बनाया। जस्ट चेक वंस, अच्छा लगेगा गो फॉर मेंबरशिप, नहीं तो नहीं, एक बार देख लो, दैट्स इट, दैट्स इट। जो आप देखना है एक बार चेक कर सकते हो। हाँ, और हाँ एक्सेल वाला जो आप पढ़ रहे हो अभी, एक्सेल के लिए, आई नो आप एक्सेल के लिए पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको एक्सेल में डाउट आ रहा है, इसीलिए एक्सेल फ्री में है। इसका मेंबरशिप वाला कोई वीडियो नहीं है एक्सेल का, फ्री वाला सबके लिए एक्सेल में मैंने दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है एक्सेल सबको ज़रूरत है, तो क्यों अलग से मेंबरशिप देने का, तो इसलिए फ्री वाला एक्सेल में ही है, राइट। क्या मेरे जीमेल में भी भेज सकते हो ये सब? हाँ ये सारे मैं भेज, ये लिंक चाहिए क्या आपको? सारे लिंक, मतलब मैं लिख देता हूँ, सारे लिंक चाहिए क्या, मतलब ये सारे लिंक चाहिए तो हाँ आप जीमेल आईडी अपना दे दो, मैं भेज दूंगा, राइट। आप अपना जीमेल आईडी दे दो, मैं उसमें ही भेज दूंगा। या तो आप मेरा जीमेल आईडी ले लो, उस पर आप हाय हेलो कुछ भी भेज सकते हो, मेरे को मेल मिल जाएगा आपका, मैं वहाँ पे आपको सारा लिंक सेंड कर दूंगा, राइट। मेरा मेल आईडी ले लो आप, ठीक है। वहाँ पे आप हाय हेलो एनीथिंग यू कैन राइट, ताकि मुझे पता चले आपका मेल है। या तो आप अपना नाम लिख दो, आई विल सेंड यू एवरीथिंग। मतलब ये सारे जो वीडियो के लिंक है, सीक्वल कोर्स का लिंक, मैथ्स का लिंक, असाइनमेंट असाइनमेंट जो भी है, आई विल सेंड यू, राइट। ठीक है। सो किसी को कुछ भी डाउट्स हो लाइव स्ट्रीम पे आप पूछ सकते हो। हाँ अनिल, हाँ चलो आप मेल भेज दो, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा। आप मेल भेज दो मेरे को, आई विल सेंड यू, राइट। तो ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। नेक्स्ट वेबसाइट क्या है? मेल भेज दिया हूँ, लेट मी चेक। नहीं आया भाई मेल। आप यही मेल आईडी दे रहे हो ना पक्का, यही वाला? नहीं तो आप अपना मेल आईडी एक बार भेजो लाइव चैट में, क्योंकि मेल, एक मिनट में स्पैम भी चेक करता हूँ।
एक्चुअली स्पैम भी चेक कर रहा हूँ स्टिल। देखो भेज दिया हूँ जीमेल। भाई नहीं आया भाई, नहीं आया। आई थिंक देयर इज सम इशू इन दिस। आप चैट में भी भेजो क्या? चैट में भी तो नहीं दिखा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, चैट में भी नहीं दिखा रहा है रिलेटेड टू दिस। आप एक काम करो, आपका जीमेल में है ना, आप अपना यूज़र नेम भी दे दो, मतलब @gmail.com के पहले जो है वो आप दे दो। मैं आपको मेल भेजता हूँ, ठीक है? आप बताना आपके पास गया है कि नहीं। जैसे मेरा क्या है, classes.with me@gmail है ना, तो @ के पहले जो भी है वो आप मुझे भेजो, मैं आपको सेंड करता हूँ, राइट? आई थिंक मेल नहीं आया क्योंकि मैं स्पैम फोल्डर भी यहाँ चेक कर रहा हूँ, राइट? इसलिए शोकेस नहीं हो रहा है। @ के पहले अब जो है वो आप भेजो, क्योंकि यहाँ शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और ना यहाँ पे मेल है। आप अपना जस्ट ये वाला भेज दो यार, @ के पहले जो भी है। आया नहीं है भाई अभी तक फ़िलहाल के लिए। मैं स्पैम फोल्डर भी चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे तो नहीं है टू बी ऑनेस्ट। राइट, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब जो है मेरे को भेजो, मैं आपको सेंड करता हूँ, राइट? @ के पहले जो भी रहेगा वो जस्ट सेंड मी, आई विल सेंड यू अ मेल बैक। रिट्रीव द डिटेल वेयर प्रॉफिट ग्रेटर देन 100 एंड क्वांटिटीज बिटवीन 2 and 5। तो यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स है अपने पास। दो रिक्वायरमेंट क्या है? दो रिक्वायरमेंट। पहला रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट डिटेल्स। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? क्वांटिटी। ठीक, अब इस पे अपने को क्या करना है? सिंपल, जो प्रॉफिट है वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो क्वांटिटी है वो 2 और 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? 2 और 5 मतलब 2, 3, 4, 2.5, 2.8, 4.9। ठीक, अब दो रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे कवर अप करें? लेट्स गो हियर, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम 7-Eleven स्टोर, ठीक है, एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? प्रॉफिट और क्वांटिटी, राइट? बस यही दो कॉलम चाहिए अपने को। अपने को लिखना है वेयर, रिट्रीव द डिटेल्स बोला है बाय द वे, तो चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग लिख देते हैं। प्रॉफिट ग्रेटर देन 100
and quantity in, सॉरी बिटवीन पूछा है, क्वांटिटी बिटवीन 2 and 5। एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ देखो जितना भी क्वांटिटी है वो 2 और 5 के बीच में है, राइट। और जितना प्रॉफिट आप देख रहे हो सब 100 के ऊपर है। अगर मैं करूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय प्रॉफिट, तो देखो क्या आ रहा है आउटपुट। यहाँ पे आ रहा है 100.122 इस तरीके से। और सेम चीज़ अगर मैं ऑर्डर बाय क्वांटिटी करूं तो 2 आ रहा है, ठीक है। 2 मतलब बिकॉज 2 और 5 के बीच में हमें आउटपुट चाहिए, राइट, इसलिए बोल रहा हूँ। सो टिल हियर एनीबडी हैव एनी डाउट्स? किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम पे, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द लाइव स्ट्रीम। एनीबडी हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द लाइव स्ट्रीम। आप डाउट्स पूछ सकते हो, आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस। Anybody have any doubts in this? किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम पे, प्लीज़ आस्क योर डाउट्स। Let me see what we have. Okay, गया एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, वेट। ना भाई अभी तक आया नहीं है, स्पैम में भी नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ। अब एक काम करो, आप अपना मेल आईडी भेजो, लेकिन जैसे @gmail.com रहेगा ना, @gmail.com के पहले जो भी नाम है वो आप लाइव चैट में भेजो, मैं सेंड करता हूँ मेल, ठीक है। वो आप लाइव चैट में भेजो, आई विल सेंड यू मेल, ठीक है, राइट। या तो एक काम करो, मेरे कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, कोई भी वीडियो या पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाके अपना मेल आईडी लिख दो, राइट, मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी वीडियो में जाओ, मेरा कोई भी वीडियो में, या तो इसी लाइव स्ट्रीम के वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट, लाइव चैट नहीं, कमेंट सेक्शन में, राइट। वहाँ जाके अपना मेल आईडी लिखो, मैं सेंड करता हूँ आपको मेल, ठीक है।
लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. ओके, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया असाइनमेंट नंबर 2. अब देखते हैं अभी कितना 9:20 हुआ है. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव. लाइक अनिल, आई होप आप मैसेज किए होंगे रिलेटेड टू दिस. So let's check out. तो ओके देन लेट्स क्लोज द लाइव स्ट्रीम. अभी फ़िलहाल के लिए कोई है नहीं अपने लाइव स्ट्रीम पे. और आज हमने असाइनमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट किया है. तो कल वापस से हम लोग नया असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट नंबर 3. तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम. अब इसको मैं एंड कर रहा हूँ, एंडिंग द पोल हियर. ओके, वी हैव अ क्वेरी. जो मेरा नेम अनिल. ओके, मैं आपको मेल सेंड कर रहा हूँ. वेट, आप बताना गया है कि नहीं. एक मिनट. और जीमेल में ही है ना आपका? अनिल, एक मिनट. अनिल मत. ओके, सॉरी. अनिल Gmail. देखो, मैं आपको मैसेज सेंड किया हूँ, एक बार आप चेक करो. पहुँचा है कि नहीं. तब तक मैं इसका आंसर दे देता हूँ. ओके, तो इसका आंसर रहेगा दिस वन. चलो, अभी आज सही आंसर दिए हैं लोगों ने. 40% लोगों ने सही आंसर दिया, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर. ओके, नहीं है आपका जीमेल में ही है ना, @gmail.com. आई हैव सेंट यू. एक बार चेक करो. अभी है. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है. ओके, वही वाला है ना मेल आईडी. एक बार आप ये भी चेक कर लो, फिर मैं आपको भेज देता हूँ सारे प्रोजेक्ट के लिंक. राइट, लेट मी सेंड यू द प्रोजेक्ट लिंक. सीक्वल कोर्स का भी आप ले लो मेल, और मैथ्स फॉर डेटा डोमेन का भी ले लो. और क्या, इतना ही है अपने पास. ठीक है, मैं एक बार सेंड कर रहा हूँ अनिल, एक बार चेक कर लो आप.
Hey, hi Shantu, welcome to live stream. Hi Dhruv, welcome to live stream. तो अनिल एक बार चेक कर लो, सारे मेल्स मैंने सेंड कर दिए रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट एंड ऑल. Okay, we have a query from Shantu. My brother had done with AWS developer, but is struggling to get a job. Let me know if job in your circle. Okay, okay, right. I will tell my friends, like, if there is any opening for AWS developer, I will surely, either I will post in the live stream, I mean YouTube post or something, like if it is related to fresher or any work ex, if you can write in the live chat, like if it is fresher or like experience, you can say that, so that I can ask them कि this is the experience or this is the year of work ex something, I can ask them. ठीक है. जरूर भैया, आपने मेल देखा मेरा मेल? अभी मेरे पास कितना 92 मेल्स है, तो आई विल बी चेकिंग इट अप. ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ एक एक. आई विल सेंड इट. फिलहाल के लिए ध्रुव, टू बी ऑनेस्ट, वो अभी सिएटल में, लाइक लास्ट वीक ही वेंट टू सिएटल. तो लेट्स सी कब तक देता है वो, क्या करता है. मैं जितना लास्ट वीक मैंने मेरा बात हुआ था, बिकॉज लास्ट वीक ही हमने प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ बात किया था, राइट. तो अभी वो सिएटल में है. अगर वो क्यों बिजी रहता है, दैट्स द थिंग. आई विल सेंड हिम, भेज देगा वो, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका एक बार मेल चेक कर लूँ. आई विल सेंड हिम, राइट. द रीज़न वाई आई एम सेइंग कि वो आउट ऑफ कंट्री, बिकॉज आउट ऑफ कंट्री जब लेके जाते हैं हम लोग को, एंड वी आर रियली बिजी एट दैट टाइम. बिजी मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज़ हाईली केप्ट इन द फर्स्ट प्रायोरिटी. दैट्स द ओनली इशू. तो और ऊपर से इसका जो टाइमिंग है, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, तो इसीलिए अब देखते हैं क्या है क्या नहीं. आई विल check out your mail and I will forward it to him, right. Okay, Shantu, thanks a lot. Experience 1 to 2 year. ठीक है, I will send. ठीक है Shantu, I will ask, no worries. Thanks a lot. Okay भैया, भाई भेज दिया जीमेल सेंड में. एक बार चेक कर लेता हूँ यार, आपका मेल आया कि नहीं. फिलहाल तो कहीं अनिल का कुछ मेल दिख नहीं रहा है भाई. मैंने भेज दिया, मैंने आपको मेल भेज दिया. आपको मिला है क्या मेल? एक बार चेक कर लो. लेकिन आपका मेल अभी तक आया नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट. मतलब आपने कुछ भेजा है तो अभी तक आया नहीं है अनिल करके. मतलब अभी लेटेस्ट ऊपर तो कुछ दिखा नहीं रहा है. 92 मेल्स हैं, फिर भी ऊपर शो होना चाहिए, बट स्टिल इट इज़ नॉट रिसीव्ड टिल नाउ. मैंने अपने साइड से भेज दिया है वो सारे वीडियोस, आप चेक कर लो. वो फ्री वाले वीडियोस हैं एंड इट इज़ गुड टू गो. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव. जो मेरा आईडी
लिखा हुआ है भाई, उसमें आया नहीं, आपके साइड से कुछ मेल आया नहीं है भाई, लेकिन मैंने अपने साइड से भेज दिया। ओके भैया, स्केलर अच्छा है या डेटा कैम्प? भाई एक बार आप रिव्यूज़ देख लो यार, क्योंकि मैंने ना स्केलर से कुछ कोर्सेज लिए हैं, ना कुछ पढ़ा है, ना कि डेटा कैम्प से, तो आप एक बार चेक कर लो। बट स्केलर का मैं ऐड बहुत देखूँ, बट रिव्यूज़ क्या है वो मेन चीज़ है, ठीक है। अब रिव्यूज़ एक बार चेक कर लो कि मैंने कुछ इन पर्सन कुछ मैंने कोर्सेस या कुछ स्टडी मटेरियल आई हैवेंट परचेस्ड फ्रॉम देयर, तो मैं वो रिव्यू दे नहीं पाऊँगा, राइट। हाँ, बट स्केलर का मैंने एड्स बहुत देखा है, बहुत बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब एड्स में ज़्यादातर, वहाँ पे मैंने देखा है स्केलर का एड्स बहुत आता है। बट मेन चीज़ रिव्यू पे फ़र्क पड़ता है, एक बार आप रिव्यू चेक कर लो क्या है क्या नहीं। अच्छा, और कोई प्लेटफॉर्म यू प्रिफर फॉर कोर्स? अगर आप मुझे पूछोगे तो मैंने यूडेमी से नाम के लिए कोर्स किया था, सीक्वल का, एक्सेल का, ये दोनों किया था। और बाकी कोर्सेरा से मेरे को फ्लिपकार्ट से कोर्स मिला था, मतलब आई मीन टू से एम्प्लॉय के लिए लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ से मैं किया था। मैंने कुछ पे नहीं किया था कोर्सेरा के लिए, बिकॉज कोर्सेरा का थोड़ा हाई एंड में रहता है कोर्सेज, इसीलिए। तो फ्लिपकार्ट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दे गिव फ्री कोर्सेज, तो वहाँ से मैंने कोर्स किया था। अब पता नहीं कहाँ पे है उसका सर्टिफिकेट, बिकॉज वो इट वाज लाइक दैट कि फ्री में मिल रहा है कर लो। हाँ, बट यूडेमी के लिए आई हैव पेड फॉर सीक्वल कोर्स एंड फॉर एक्सेल कोर्स फॉर सर्टिफिकेशन पर्पस, राइट। एक्सेल नॉलेज पर्पस के लिए, क्योंकि एक्सेल का अच्छा वीडियो मिला था, सीक्वल का फॉर सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। मैंने अपने टाइम में किया था, उस टाइम शायद स्केलर डेटा कैंप नहीं था, व्हाट आई बिलीव, क्योंकि उस टाइम मैंने एड्स नहीं देखा था, मे भी होगा। ओके, भैया फ्रीलैंसिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म? भाई मैंने बताया, मैंने टिल डेट रेडिट यूज़ किया है और लिंक्डइन। और अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूँ तो 7 क्लाइंट्स रेडिट से मिले, एक लिंक्डइन से मिला है, ठीक है, मतलब आउट ऑफ 8 क्लाइंट, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक। तो ये दोनों वेबसाइट्स मेरे को बहुत हेल्प किया है क्लाइंट के लिए। बट आज के डेट में, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ आपको, अलग अलग फ्रीलांसिंग के लिए वेबसाइट्स यू शुड गो एंड सर्च बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन, राइट। मेरे टाइम में उतना डेटा, बोलते हैं ना कि डेटा डोमेन को उतना स्पॉटलाइट नहीं मिला था। हाँ, एसडीई वगैरह को ज़्यादा स्पॉटलाइट था, तो उतना कंपटीशन नहीं था। आज के डेट में डेटा डोमेन को ज़्यादा स्पॉटलाइट में रखा गया है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा फ्रीलांस गिग्स होंगे जो क्लाइंट्स सर्च कर रहे होंगे। तो आई वुड सजेस्ट यू कि बाकी फ्रीलांस रिलेटेड वेबसाइट्स में भी आप थोड़ा एक्सप्लोर करो। और रेडिट और लिंक्डइन मेरे साइड से ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप यहाँ पे आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड सर्च बिकॉज इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रॉम माई साइड। भाई आपका जीमेल कैसे, समझ आपका जीमेल कैसे चला है, मतलब नॉर्मल है मेल। आपको देखो, आप यहाँ पे जब आप मेल सेंड करते हो ना, एक टू का साइन रहता है, ठीक है, मतलब एक तो सब्जेक्ट पहले जो रहता है वो सब्जेक्ट लाइन रहता है। एक मिनट में चेक करता हूँ, मैं डेस्कटॉप में तो बोल रहा हूँ। हाँ देखो, फ्रॉम लिखा रहेगा नॉर्मल, आपका मेल आईडी, फिर आता है टू, वहाँ पे आपको जिसको सेंड करना है मेल उसका मेल आईडी लिखना है, फिर आता है सब्जेक्ट स्पेस, और उसके बाद आता है बॉडी, राइट। तो इस तरीके से नॉर्मल चलाना चाहिए, दैट्स इट। नॉर्मल है, दैट इज़ बेसिक्स वन। और अगर आपको
प्रॉपर ट्यूटोरियल चाहिए मेल कैसे सेंड करना है एंड ऑल, तो जी मतलब यूट्यूब में आप चेक कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे प्रॉपर वीडियोस हैं रिलेटेड टू मेल सेंडिंग। ये बेसिक्स बस बता दे रहा हूँ। जब आप देखना, एक पेन का साइन होगा, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो एक पेन का साइन होगा एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट। वहाँ पे जाओ, क्लिक करो, देखना साइड में राइट कॉर्नर में साइड में एक ऐसे विंडो खुलेगा, तो आपका मेल आईडी लिखा होगा फ्रॉम, टू का एक स्पेस होगा और एक आपका सब्जेक्ट लाइन होगा, राइट। तो टू में आपको उनका मेल आईडी लिखना है जिसको आपको भेजना है, जिसको आपको सेंड करना है, राइट। राइट। और सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़रूरी है। मेरे को सेंड कर रहे हो सब्जेक्ट लाइन का ज़रूरत नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रैक्टिस करो सब्जेक्ट लाइन लिखने का, बिकॉज जॉब सर्च में ज़्यादा काम आता है। और बाकी बॉडी, ओके। भैया मेरे फ्रेंड को बाहर कंट्री में काम करना है, डू यू हैव एनी आइडिया वो कैसे करें? भाई बाहर कंट्री में आई हैव नेवर अप्लाइड। मैं बाहर कंट्री जितना गया हूँ काम के लिए, थैंक्स टू दिस कंपनी। और हाँ, बाकी घूमने गया हूँ फैमिली ट्रिप के साथ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। घूमने का वी डोंट हैव टू डिस्कस। बाकी मैं कंपनी साइड से गया हूँ जस्ट फॉर स्टेक होल्डर वर्क, ठीक है। तो अपना स्टेक होल्डर फॉरेन का था, इसलिए कंपनी हैड सेंड मी, दैट्स इट। तो हाँ, दैट इज़ हाउ आई हैव वेंट टू फॉरेन। अब आप जो पूछ रहे हो रिलेटेड टू, ओके, ही इज़ फ्रॉम डीई। भाई सबसे बेस्ट रहेगा कि यार करियर पोर्टल खोलो कंपनीज के एंड स्टार्ट अप्लाइंग, राइट। कि करियर पोर्टल में यू विल गेट टू सी ऑल द कंट्रीज नेम एंड ऑल दोज थिंग्स। अप्लाई करो, अगर हो जाता है तो कंपनी विल टेक केयर ऑफ योर वीज़ा एंड ऑल, दैट्स इट, राइट। दो तरीका है, या तो आप अप्लाई, मतलब इफ़ ही इज़ वर्किंग, ही और शी इज़ वर्किंग, तो आप कंपनी के थ्रू इधर जा सकते हो, या तो आप अप्लाई करो बाहर कंट्रीज में एंड यू कैन गो एंड वर्क देयर। या तो और एक तरीका है, अगर आप पढ़ाई रिलेटेड जा सकते हो, रिलेटेड टू स्टडी और एजुकेशन। मेरे बहुत फ्रेंड्स ने किया है, मतलब उन लोगों का जब पढ़ाई का टाइम था तब का बात कर रहा हूँ, बीटेक वगैरह। तो एजुकेशन के लिए वो लोग गए और वहाँ पे वो लोग जॉब कर रहे हैं अभी। तो ये एक तरीका है, दैट्स इट। तो ओके, देन लेट्स सी। ओके, तो ओके, देन लेट्स क्लोज द लाइव स्ट्रीम राइट नाउ, है कि नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ मैसेजेस नहीं है। सो ओके, मैं लाइव स्ट्रीम क्लोज करता हूँ एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय लाइव स्ट्रीम एंड आस्किंग मी डाउट्स। बाकी किसी को कुछ एडिशनल डाउट्स हो तो अपना मेल आईडी इधर है, you can send me mail, right? Max by Saturday and Sunday I will revert you all the mails, ठीक है, max by that for the week, तो no worries about it. So bye bye everyone, take care, happy coding, happy learning and happy querying, and good night.